Integrative. Yeah. Discussion relating to the preamble of the Constitution of India reads, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens." Tapare stage re dekhiniya justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. The word socialist, secular, integrity. ये जो term गुड़ा use करा जाइए थी, originally not there in the preamble. ये गुड़ा preamble नथिला, but these were added to the preamble by the 42nd Amendment of the Constitution of India in 1976. 42nd Amendment 1976. ताले हमरो वर्तमान आर जो आमे सिग्निफिकेंस गोटे डिस्कशन करी करी आले आ ऑब्जेक्टिव पोर्शन को आसिले हमरो अंश कहिबार कारण होची जे लास्ट को जो रही छि इंटीग्रिटी टर्म टा ऐड करा जाय छि इंटीग्रिटी देखिनिया पेज नंबर 138 जो मानकर जेना ऊपरडा बुक अछि देखो the term integrity was added to the preamble by the 42nd Amendment Act 1976 ऐक्य भाव एकता हमें प्रतिष्ठा करिबा. The words unity and integrity have been made to prevent the tendencies of regionalism, provincialism, linguism, communalism, and separatist activities. आंचलिकवाद गोटे अंचलर लोक माने कोन कले आ गोटे अंचल सहित तांकर किछि प्रभेद आनिले किछि डिफरेंस आनिले जोटा प्रोविंस की करला फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन नेशनल यूनिटी आ इंटीग्रेशन पई प्रॉब्लम आनिबो सेति पई आमे कोन कले ना इंटीग्रेटी टर्म को यूज करैले. देन प्रोविंशियलिज्म ओडिशा कथा कुह बिहार कथा कुह वेस्ट बेंगल कथा कुह तमिलनाडु कथा कुह प्रत्येक प्रोविंस भितर मध्ये कॉन्ट्राडिक्शन आसिला किंतु इंटीग्रिटी जगो समस्त कोन कले होल हार्टेडली यूनियन एकरे रहिले. लिंग्विज्म विभिन्न प्रकार भाषा रहिला भाषा को बेस करी विभिन्नता देखा दला तेणु भाषागत विभिन्नता को आमे ऐक्यता माध्यम रे परिप्रकाश कले सेटा हला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. कम्युनलिज्म सांप्रदायिकवाद धर्म को बेस करी विभिन्न प्रकार धर्म लोक माने धर्म जाजक माने आ पर्टिकुलरली धर्मर भावना आम धर्म भितर किछि विभिन्नता आनिला ताकू हम जदि एक स्वर रे बा एक करिया को चाहिबा ताले आम पई इंटीग्रिटी दरकार. नेक्स्ट हला सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज किछि स्टेट किछि व्यक्ति विशेष चाहिले भारत ठारू अन्य आमे केमिति पृथक ही गोटे गोटे राष्ट्र गठन करिबा एवं सेति पई इंटीग्रिटी रो मध्ये किछि भूमिका रही. एथिला इंटीग्रिटी चैप्टर टे एटा डिस्कशन करि देली जदि कॉलेज रे पढिला बेलु कहबे एटा ऐड करिया कथा ऐड करि देबो कॉलेज रे पढिला बेले कहि छथि कि टर्म इंटीग्रिटी बाबत रे कहि छथि सेकुलरिज्म कहि बुझे देबो को बोइरा पेश करी टेके परेडर nature of the state रही छि कोन the preamble also signifies the nature of the state which the Constitution of India seeks to establish. It declares that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. जेते बेले आमे राष्ट्र गठन करूचे सेते बेले राष्ट्र गठन पई किछि ना किछि हमर उद्देश्य रही छि. जेते बेले तमे पॉलिटिकल साइंस पाठ पढिछो सेति पई तुमरो किछि उद्देश्य रही छि एवं राजनीति विज्ञान पढिला परे मु कोन करिवि तेणु पिले हमर जेते संविधान तैयारी करा गला से संविधान रे हमर गोटे कमिटमेंट रहिला एवं से कमिटमेंट हमु कोन कहिला बा हमें कोन मन भीतर रखिले इंडिया को गोटे सोवरेन सार्वभौम राष्ट्र रूपे हमें परिगणित करिबा अर्थात विदिन और आउटसाइड इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिया इज सोवरेन. भारत वर्ष होची गोटे सार्वभौम राष्ट्र. द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट. एटा होची गोटे सार्वभौम राष्ट्र. Such declaration denotes that India is no longer a dependent country.
भारत वर्ष आउ कहा ऊपर डिपेंड करूनी जेतेबेले भारत स्वाधीन न होइतिला शिक्षा पई ब्रिटिश राज ऊपर डिपेंड करिया को पडुतिला वस्त्र पई ब्रिटिश राज ऊपर डिपेंड करिया को पडुतिला हमर थइथान पई ब्रिटिश राज ऊपर डिपेंड करिया को पडुतिला किंतु एबे हमें सेल्फ रियलाइज हे गेलेनी हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट हे गेलेनी हमें स्वावलंबी हे गेलेनी निजे निजर जेतिकी दरकार ताको हमें प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोड्यूस करिया पई चेष्टा करूचे इंडिया as an independent state with supreme power internally and externally भारत अंडर नहीं जहाँ ही करिबो निजे निजे को निजे सापेक्ष करी परिबो internally it is free to manage its own affairs निजे को निजे भारत तार निजे अफेयर को मैनेज करी परिबो and externally it is dependent on foreign control इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रोल आ वैदेशिक नीति बाबद वैदेशिक कौन से राष्ट्र चिंता चेतना भितर वैदेशिक नीतिर जो वैदेशिक राष्ट्र नीति नियम माध्यम ये बंधा ही रही इट परस्यूज इट्स फॉरेन पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली आर वैदेशिक नीति वर्तमान निजक निज कौन करुच्ची ना से परस्यू प्रवर्तन करुच्ची इंडियास मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस डज नॉट हैम्पर इट्स सॉवरेन स्टेटस जदियो इंडिया वर्तमान मेंबर अच्छी कहार ना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन रो तथापि तार इंडिपेंडेंस हैम्पर हो नाही because India has accepted the membership of Commonwealth nations voluntarily निज इच्छा रे प्रकृति एक्सेप्ट करछि कॉमनवेल्थ नेशन रो इंडिपेंडेंस को बा मेंबरशिप को देन कोटा कहलो लेमा सेक्युलर देख इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट इंडिया इज ए रिलीजियस स्टेट बा सेक्युलर स्टेट the word secular was added to the preamble by the 42nd amendment act 1976 it highlights that India has no state religion of its own Indian state gives special status to no religion the constitution of India grants equal status and freedom to all religions each citizen has the right to freedom of religion the state doesn't discriminate against anybody on the ground of religion what is the meaning of secular state dharma nirapeksh rashtra कथा कथा कहते तू निरपेक्ष विचार कर तामने कौन सी जनकाल को धरिकी कथबार्ता कर भारत वर्ष हिंदू अच्छा भारत वर्ष मुस्लिम अच्छा भारत वर्ष क्रिस्टियान अच्छा यही महान 7टा 8टा धर्म भारत वर्ष रही सब धर्म को समान सुविधा सुजोग दि जाती जो पाठ पढ़ाई खाली कहूनी हिंदू धर्म पिला पाठ पढ़े क्रिस्टियान धर्म पिला पाठ पढ़े इस्लाम धर्म पिला पाठ पढ़े प्रत्येक धर्म को समानता दि जाती आउ जी जो धर्म को प्रिफर करिबो पसंद करिबो से रिलीजन को से एक्सेप्ट करि परिबो से अधिकार मध्ये दिया जाय तले पहिले secularism concept but the word secular was also added to the preamble by the 42nd amendment act 42nd amendment act kebe pass hela 1976 it highlights that India has no state religion of its own India रे निजस्व धर्म नाही आउ Indian state gives equal status to no religion. Special, sorry. Indian state gives special status to no religion. कौन सी निर्दिष्ट धर्म को एक स्वतंत्र धर्मीय संगठनिक व्यवस्था व मर्यादा दिया जाए नहीं. The Constitution of India grants equal status and freedom to all religions. Each state has the right to freedom of a religion. प्रत्येक राष्ट्र जो राइट अधिकार अच्छी धर्म पे से धर्म रही the state doesn't discriminate against anybody on the ground of religion धर्म को बेस करी आमे कौन सी वैषम्यता आनिबा से बाबद रे भारत रे केबे परिदर्शित हुए आ कोडा देखा तो पिला माने आमे प्रियम्बल रा कंप्लीट कला परे पर बोते नेचर और फीचर्स ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन करूथिले केतरा कोने जाई छी कौन सब पढ़ाई थिला को व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतरा पॉइंट जाई थिला वो फर्स्ट written and detailed constitution second self-made and enacted constitution third preamble of the constitution fourth India a democratic socialist state fifth India a secular state sixth India is a democratic republic seventh India is a union of state हमें केतरा कंप्लीट करी छे तीन जाए कौन कहलो पॉइंट कहली मैं
written out detailed constitution माने कौन? बस दिव्य कहलो भारतीय संविधान गोटे लिखित और डिटेल संविधान कहीं कुआ जाए जिते गुटे लॉ थिला पॉलिसी थिला अमेंडमेंट थिला सब गुडा रिटन आकार लिखित आकार रहउथिला लिखित रहइबर सेटा बड़ आकार रहिथिला हां बस देखो written and detailed constitution the constitution of India is a wholly written document जहाँ सब रहउथिला सब लिखित आकार रहउथिला which incorporates the constitutional law of India भारतर संवैधानिक नियम को इनकॉर्पोरेट करूथिला पुणी देखिबा it was fully debated and duly enacted by the Constituent Assembly of India आर प्रस्ताव गुड़े को fully debated हेतिला आउ duly enacted हेतिला Constituent Assembly द्वारा it took the Assembly 2 years 11 months and 17 days to write and enact the Constitution लिखिया पई एवं प्रणयन करिया पई संविधान Indian Constitution is a very detailed constitution एवं ए Constitution रे कोन रहितिला पिले It consists of 395 articles divided into 22 parts, which is 12 schedules, and 105 constitutional amendments. It is a constitution both for the center and the states of the Indian Union. It is one of the largest constitutions in the world. World रे सबुठारो बड़ constitution बोले हमें consider करू. It is indeed much bigger than the US Constitution. America Constitution ठारू बड़ थिला कारण America Constitution रो केतेटा आर्टिकल थिला 7टा आर्टिकल और फ्रांस रो केतेटा थिला 89 आर्टिकल्स अमेंडमेंट अमेरिका रो केतेटा थिला 26 अमेंडमेंट्स सेल्फ मेड एंड एनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ए निजस्व तैयारी बोली केमि तमे जानिले देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग थ्रू देयर इलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड बॉडी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट्स ए फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड on 9th December 1946. Kebe 9th December 1946. It passed the objective resolution on 22nd January 1947. Objective resolution kebe gala 22nd January 1947. Thereafter, it initiated the process of constitution making in the right earnest and was in a position to finally pass and adopt the constitution on 26th November 1949. The constitution became fully operational with effect from 26th January 1950. We celebrate this day as our Republic Day. It is celebrate 26 January Republic Day. The Constitution of India is thus a self-made and duly enacted constitution. It is निजस्व तैयारी आउ आमो देखो we celebrate this day as Republic Day. The Constitution of India is thus a self-made and duly enacted constitution. The preamble of the Constitution clearly states this fact. A fact that preamble हमको कौन करते जाने? Then पिले आसिला preamble of the Constitution. The preamble to the Constitution of India is a well-drafted document which states the philosophy of the Constitution. Constitution of philosophy कौन है पहले? It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic and a welfare state, committing to secure justice, liberty, equality for all the people of India, and also promoting fraternity, dignity of the individual, unity and integrity of the nation. The preamble is the key to the Constitution. It states, in a nutshell, the nature of Indian state and the objectives India committed to secure for our people. देखो प्रियम्बल भल से हमें पढ़ी चे प्रियम्बल आमर हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रियम्बल बाबद रे प्रकृति रे लिखित है कि रही चे जे आम संवैधानिक मार्ग रे संवैधानिक दृष्टिकोण रे आमे केमिति कोन प्रोग्रेस करिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेष केमिति डेवलप स्टेज को आसी परिबे आ प्रियम्बल रे जो गुडा कमिटमेंट करा जाई छि सेटा हमर लीडर ऑफ द नेशन सिटीजेन्स समस्त जी भी भारत वर्ष हूँ से आभिमुख्य रहा दरकार खाली जे राजनेता मैंने कहे आम प्रियम्बल को पालन करूँ से कथा आम तार सुविधा असुविधा उभय अंगांगी भाव जड़ित रहा दरकार एवं ऑब्जर्व करवा दरकार
कारण प्रिएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे ऑगस्टस हाउस एवं प्रिएम्बल कौन करिवो ना पर्टिकुलरली हमको से बाबद रे एम्प्राइज करिवो India is a democratic socialist state देखो although right from the beginning the Indian constitution fully reflected the spirit of a democratic socialism. It was only in 1976 that the preamble was amended to include the term socialist. Socialist term टा हमर 42nd amendment 1976 रे include करा गला. It is now regarded as a prime feature of Indian state रे गोटे prime feature बोली हमें consider करू. India is committed to secure social, economic, and political justice for its entire people by ending all forms of exploitation and by securing equitable distribution of income, resources, and wealth. Income ho, resources ho, wealth madhya amku jane dela. This is to be secured by peaceful, constitutional, and democratic means. Principal way democratic means रे ଆଉ equitable distribution କେମିତି ଆମେ income କରିବା ଆଉ source ଗୁଡାକୁ wealth ଗୁଡାକୁ proper way ରେ utilize କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆମର perspective କାହାର ନା particularly Indian ର socialistic state ର ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ତମ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ sources ଗୁଡାକୁ equal କଣ distribute କରିବା ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ source ହଉଛି ଯଦି କହିବା iron ore ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ଆସାମରେ ଟି ଅଛି ଦେଖିନିଅ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ରିସୋର୍ସ ଅଛି ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କିମ୍ବା ଆମେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେକ୍ଟରରେ ଅଟୋନୋମି ରହିଛି ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ର ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେୟାରିଂ ରଖିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ରହିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ is a secular state. India is secular state. India gives special status no religion. There is no such thing as state religion of India. This makes it different from theocratic states like Islamic Republic of Pakistan and other Islamic countries. Further, Indian secularism guarantees equal freedom to all religions. The constitution grants the right to religion freedom to all citizens. देखो आमे सेकुलर कथा कहबा पिले धर्म कथा जदि प्रकृत रे धर्म बोली आमे कहूचे ताले धर्म होउची हमर कर्म आम कर्म होउची हमर धर्म बर्तमान तमे जदि कहबो मंदिर रे जाई के बसी के पाठ पढिबो परीक्षा रे पढला प्रियम्बुल ऑफ इंडिया कोन लेख तमे घर बसी के प्रियम्बुल जदि घोषित थिबो भले से परीक्षा रे लेखि परिबो तणो पाठ पढिबाटा हमर बर्तमान होउची कोन की धर्म सेमति पिले प्रत्येक व्यक्ति जेतेबेले सेकुलर स्टेट बाबद रे आमे कहूचे एटी पर्टिकुलर रिलीजन को इंपोर्टेंस दबा दरकार नाही रिलीजन गोटे लोकर कर्म ही प्रकृति तार धर्म गोटे लोक जिते निजक निजे कौन कर अनुप्राणित हो पार एवं राष्ट्र शासन क्षेत्र में एवं राष्ट्र को केमी एक अद्वितीय स्थान में रखिब से भावना जब मन में आसीगला आम जाना आम धर्म हूँ ठीक धर्म नुहे केवल मंदिर भितर जाकि घंटी बजा तेणु धर्म ये समाज रे जिते प्रकार धर्म था आम मान श्रेष्ठ धर्म हूँ मानव धर्म गोटे मनीष असुविधा पड़ी साहाय्य करवा से श्रेष्ठ धर्म एवं से भली धर्म रे आमको अनुप्राणित होगा पड़ो किंतु भारत वर्षर से कौन से एक निर्दिष्ट धर्म को रखा जाए जातीय धर्म हिसाब से सब धर्म को समान भाव में सुविधा सुजोग दि जाउछि नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थियोक्रेटिक माने रूल बाय द रिलीजन पाकिस्तान रे तमे जदी जीवो जो शासन चली कुरान को बेस करी चली थियोक्रेसी रूल बाय द रिलीजन आमर रिलीजन को बेस कर शासन चलनी आमर डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल आमे जनसाधारण को लेकर आमर शासन प्रतिष्ठा करी इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अटेंशन आना इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत गोटे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक केमिति कोन एडजस्ट करबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट अपॉन द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल
The people enjoy equal political rights. On the basis of these rights, they freely participate in the policies of a process of politics. They elect their government. Free, fair, and regular elections are held for people for electing governments. For all its activities, the government is responsible before the people. The people can change their government through elections. No government can remain in power which does not enjoy the confidence of the people. India is world's largest working democracy. ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ ଯେ ପଛରେ ବସିଛ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଇଯା ମତେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇଭଳି ପଢ ହଁ ଦେଖ ପିଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଅଛି ସେଠି ସମାନତା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଆମର ଦେଶର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି democracy believes in equality and when we consider about republic republic means the head of the state must be an elected president ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଗୁଡା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ ପଲିସି ଗୁଡା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯୋଉ ପଲିସି ଚାଲିବ ଯୋଉ ଶାସନ ଚାଲିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ଚାଲିବ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ The preamble declares India to be a republic. India is not ruled by monarch or a nominated head of state. India has an elected head of the state who has power for a fixed term of 5 years. After every 5 years, the people of India elect their president. कौन कर काम हो गई ग्रेजुएशन को फोन जे सेपटे जो चार नोट करता हाँ देखा पिले ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ରିପବ୍ଲିକାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି The preamble declares India to be a republic. India is not ruled by a monarch or a nominated head of the state. India has an elected head of state, the president of India, who ends power for a fixed term of 5 years, 5 वर्ष. After every 5 years, the people of India elect their president. प्रति 5 वर्ष रे president को elect करते को माने India रो people. Next students, India Union of States. भारत राज्य मानकर समाहार केमिति ଆମେ କହିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକର ସମାହାର Article 1 of the Constitution of India declares that India, that is Bharat, shall be a union of states. The term union of states shows two important facts. The Indian Union is not the result of voluntary agreements among sovereign states. It is a voluntary agreement. And second, that states of India do not enjoy the right to secede from the union. भारत वर्षरु केही ऐक्यता भितरु दूरेई जाई परिबेनी प्रत्येक राष्ट्र माने बंधा हेकि रहिबे अर्थात बांधी हेई रहिबे सेटा होची जातीय स्वत बा जातीय प्रेम रे बांधी हेकि रहिबे देखो and the Indian Union is not the result of a voluntary agreement among sovereign states and the state of India do not enjoy the right to secede from the union. Indian Union has now 28 states and 8 union territories. In July 2013, the Union Cabinet announced the decision to create a separate state, Telangana, out of Andhra Pradesh. Now, people of Burkhalands, Vidarbha, and some regions of Uttar Pradesh have started raising demands for the creation of their separate states. बहुत गुड़े स्टेट अच्छा सी कहते आम सेपरेट हो इंडियन यूनियन पाखु कारण सेपरेट हो गले निजक निजे से एस्टाब्लिशमेंट हे आ इंडिया सहित टक्कर देवे
ପିଲେ ଲେଖିଲ ଟିକେ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି। पॉइंट वन लेखा प्रियम्बल ओडिया डाकिदेली इंग्लिश रे लिखतार ओडिया डाकी लेखा प्रियम्बल preamble is the horoscope political horoscope preamble is the political horoscope और HOROSCOP horoscope of the people of India पेपर लिखो the constitution of India the constitution of India has acted as a source of has acted as a source of political stability and development political stability and development as a source of political stability and development it took the constituent assembly it took the constituent assembly constituent assembly 2 years 11 months and 17 days to finalize the constitution next point as a sovereign independent state independent state ପିଲେ କଣ ଲେଖିଲା କୁହ India testifies to the fact that India is committed to secure social, economic and political justice
ତାପରେ ଲେଖ next point ଲେଖ by the 42nd constitutional amendments the term secularism is added to the constitution added to the constitution added added to the constitution by this there is no official religion in India. There is no official religion in India. Third point ଲେଖ କେତେଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଲେଖ the preamble declares India as a democratic state. The preamble declares India as a democratic state. Next point ଲେଖ the preamble considers India to be a republic ଲେଖ କହିଲେ negatively this means that next point negatively this means that negatively it means that India is not ruled by a monarch or nominated head of state positively it means that India has an elected head of state positively it means that nice I would have it is negative sir it's उसको बहुत अच्छी बढ़िया मैडम बहुत है right one left
ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ମତରେ ଓଡିଆ ଯେମନ ଲେଖୁଛି ଲେଖ ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ମତରେ ଭାର୍ଗବ ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ମତରେ ଲେଖ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମ ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ संविधान आत्म सदृश नेक्स्ट लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतरे लेखुचे लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतरे प्रस्तावना संविधान आदर्श प्रस्तावना संविधान आदर्श वो आभिमुख्यर एक महत् घोषणा आभिमुख्यर एक महत् घोषणा आभिमुख्यर एक महत् घोषणा बा महान घोषणा कहले अत्युक्ति हबनी महान बा महत् घोषणा लिखल तापर लेख